Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 14th of March. The first topic is government drugstores to sell nutraceuticals. We'll see the detail about this. Second, Ukraine crisis delay AK-203 retrials. We have seen that the recent engagement between India and Russia called for the manufacturing of AK-203 rifles. Third, Cabinet Committee on Security reviews the defense situations. Second last, war and its impacts on the semiconductor. We have seen the crisis over the supply of semiconductor, and it actually started when the pandemic has started, right? And the last is no volitions for India's stand on Ukraine war. So this is an editorial from the Hindu. We'll understand the detail and the perspective of this editorial. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based question. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about the prelims test series, this would be helpful for those aspirants who will be appearing for the upcoming prelims examination. For this test, you'll be getting 60 high quality tests along with the IAS Gazette magazine subscription. For more details, you can refer to the description section down below, जहाँ पे details दी हुई है, आप ज़्यादा detail वहाँ से ले सकते हैं. The first news of the day, government drugstore to sell nutraceuticals. This particular news is important for General Studies paper 2 in mains, that is government policies and intervention for the development of various sector and issues arising from it, design and implementation. At the same paper, यहाँ पे ये एक और टॉपिक है आपकी issues related to development and management of health, वहाँ पे भी ये important है. So recently, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र जो है, जिसको PMBJP भी कहते हैं, they have added nutraceutical product which include protein powders, bar, malt-based food supplements and immunity bar for its customer, right? Earlier it was only selling some of the medicinal properties food. Now they would be giving some protein bars, protein powders, malt-based food supplement to enhance the level of nutrition for our citizen. So the decision is aimed at providing accessible, standardized, affordable and generic medicine to the entire population of this country. Now if you talk about PMBJP, जो Kendras हैं, they will offer the product of basket around 1,451 drugs and 240 surgical instruments. And they would be adding all other nutraceutical supplements which include protein powders, bars and other immunity bars as well. Now, nutraceuticals hoti kya hai? This is something which is again relevant for your prelims examination. As you can see this image, you can make out how the nutraceutical things work about. So nutraceutical foods are basically foods which provide medicinal or health benefit, including the prevention or a treatment of disease. Like जैसे nutrients हैं, किसी जो medical implications हैं, उसको समझना, it's more of a preventive measures that is working. Healthy eating promotes good health and good immunity. तो उस concept पे nutraceuticals की इजाद की गई. It was actually been invented. Now, nutraceuticals are generally made of herbal and botanical material. Functional food होती है जो कि component provide करती है for demonstration the psychological benefit as well as providing the health and nourishment to our body. Now, operational PMBJP केंद्र की अगर बात करें, this is currently operating with numbers 8,675 केंद्रास अभी इंडिया में फंक्शनल है, which is working across the country, जहाँ पे IT enabled warehouse बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से for some specific locations like Gurugram, which is there in Haryana, Chennai, Guwahati and many other operational areas coming. और अभी recent में जो start की गई है, सूरत में भी इसके operations को start किया गया. Now the government has set a target to increase the number by 10,500. At present, this is 8,675. इसको बढ़ा करके गवर्नमेंट ने कहा है that they would be reaching up to 10,500 by the March 2025, right? Along with the 6th warehouse that would also be established. Further, 39 distributions बनाए जाएंगे, distributors होंगे that would be appointed across the country for supply and medicinal in the remotest area
of our country, and this is under the supervisions of Union Ministry for Chemical and Fertilizers. So if it is being asked in examination कौन सी मिनिस्ट्री इवॉल्व है, तो आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. Now, value added services that were part of it. So point of sale applications की अगर बात करें, यहाँ पे value added services है that has been implemented by the Pharmaceutical and Medical Device Bureau of India, PMBI. Make sure you search about this because this can be a question in prelims as well, right? तो ये एंड टू एंड सप्लाई चेन जो है उसको मॉनिटर करेगी, पूरे सिस्टम को रिवैम्प करेगी, और जो सुपरविजन्स हैं इस सर्विसेज की दैट वुड बी अंडर द PMBI. And a warehouse that has a SAP based inventory model, एक यूनिवर्सल इन्वेंट्री बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज भी यूज़ करती हैं. उसमें डिमांड फोरकास्ट की जाएगी एंड दैट वुड बी डन थ्रू द सिस्टम विच प्लेस्ड ऑर्डर विद अ डिजाइन इन्वेंट्री लेवल एज वेल. Now, what is National Pharmaceutical Pricing Authority? Because if you are discussing all this news, आपको ये पता होना चाहिए कि NPPA क्या है, किस तरह से फंक्शन करती है. So NPPA is basically authority which was set up as an authority, or you can say the attached office by Department of Chemical and Petrochemicals in 1997, जो कि अब Department of Chemical and Pharmaceuticals हो गई है. It is responsible for regulations of the price and drugs in the country. Pan India ये ऑपरेट करती हैं. एक यूनिवर्सल रूल है जो कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होती है, and it also ensure the availability of drug, accessibility of drug and affordability of drug to all citizens. तो 3A पे काम करती है. This is A3, which is A3. First is availability, second is accessibility, and third is affordability. Right? So if you're writing in mains paper, make sure you incorporate this point because some of the keywords would be again relevant in your examination. Now the other news, Ukraine crisis delay AK203 retrial. This is something which is relevant for your general studies paper too. It is bilateral regional grouping and agreement evolving India's and affecting India's interest. तो अकॉर्डिंग टू डिफेंस सोर्सेज ये पता चला है कि जो ऑनगोइंग क्राइसिस चल रही है यूक्रेन में, जहाँ पे रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, उसको लेकर के जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है 6.1 लाख AK203 असॉल्ट राइफल की जो रशिया के साथ साइन की गई थी रिसेंटली, उसके ट्रायल्स में कुछ डिले हो सकती है और जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्पैक्ट हो सकती है. राइट. सो ए पार्ट ऑफ अ प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो रीट्रायल है दैट वाज शेड्यूल्ड टू बी डन with the emanations of original equipment manufacturers, जिसको OEM कहते हैं. OEM are the actual manufacturers जो assist करते हैं technology transfer में, right? So TT would be done from there in Russia, and first half of February में बात की गई थी कि इसको पूरी तरह से complete करनी है, but because of the crisis, because of the war which is going between Russia and Ukraine, this would further delay for a month or two. Now, armed deals की अगर बात करें, the armed deals between India and Russia, how this take place. So, India signed this deal for 70,000 AK-A03 assault tickets to be procured by off-sale measures. Now, recent में government ने 6.1203 AK assault rifle की बात की थी, which is costing around 5,000 crore rupees, and this would be done, and this would be manufactured by a joint venture, which is a Indo-Russian Rifle Private Limited, जो कि कोरवा में established है अमेठी उत्तर प्रदेश में. So this name is again important. Now if you talk about IRRPL, that is Indo-Russia Rifle Private Limited, ये jointly set up की गई थी as Advanced Weapon Equipment Limited, which was earliest OFB, and ये मॉनिटर करती थी. इसमें जो रोबोट्सन एक्सपोर्ट है रशिया की, वो एक सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है जो सारी चीज़ों को हैंडल करती है, एंड दे आर द मेन partner in basically government aided है ये. So the entire process is taken care by the Robertson export. Now in other small armed deal, the repeater of 72 6-Sauer 716 assault rifle which is from the 6-Sauer was delayed. एक बहुत बड़ी ब्रांड है जो कि pistols और Mausers बनाती है, right? Even SPG people use 6-Sauer rifles तो नहीं, actually बोल सकते हैं pistols या Mausers. Now, what are the deals that are pipeline with Russia? Something very relevant for you to understand. कुछ important deals हैं जो मैं आपको pictures के through समझाऊंगा. First is Ocular class nuclear powered attack submarine. This is $3 billion, which India would be targeting to get by 2026. Again, AK-203 rifles, इसमें 1.6 billion involved है. Almost 7 lakh rifles की बात की गई है. Now, Komkova KA-206 226 light utility helicopters.
right? This is the MOU was actually signed in June 2018 and this is expected कि रशिया जो लाइट हेलीकॉप्टर उसकी प्रोडक्शंस करेगी. Apart from this, there are Kharkov class frigates, which is also there. In addition, there is moth-balled MiG-29 airflames. उसके अलावा 18 एडिशनल सुकोई 30 MKI जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है उसकी भी नेगोशिएशन होनी है. एंड फाइनली 10 Kamov Ka-31 helicopters, which is valuing around $500 million, right? So this has been approved as a contract, but yet to be signed between India and Russia. So these are some of the measures, defense trade, or you can say defense deal that has been pipelined between India and Russia. Now, increase in localizations की बात की गई है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव स्टार्ट किए उसमें मेक इन इंडिया के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग उस पर भी खासा जोर दिया गया. So as part of this, 70,000 AK-203 rifles would be produced, and this would increase to the extent of localization to 70%, from 5% to 70%. तो जो पहले मेक इन इंडिया में 5% हुआ करती थी या जितनी प्रोडक्शन 5% थी उसको बढ़ा के 70% करनी है, राइट? एंड हाउ मच राइफल वी आर टारगेटिंग? दिस इज 70,000, राइट? आई हैव टोल्ड 7 lakh, but it's actually 70,000, right? Now the rest of the rifle which produced was 100% localization processes को complete करनी है, and a modern production has been established in the small arms range जहाँ पे factory or expectance of assault rifle will be carried out. However, there is a push to foreclosure in the case जहाँ पे emphasis दी गई है boosting the domestic industry supplies as well. जो manufacturing है इंडिया की उसे boost करने की जरूरत है. Now the other news, that is Cabinet Committee on Security reviews the defense situation, something relevant for General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention for the Development of Various Sectors and Issues Arising from it, Design and Implementations. So recently, Prime Minister has chaired the Cabinet Committee on Security, a high-level committee which is there on security matters. तो पूरी कैबिनेट बैठती है इस पे और प्राइम मिनिस्टर्स को हेड करते हैं. सो दे डिस्कसेस सम ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडियाज प्रिपेयर्डनेस. कुछ दो इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात की गई है. द फर्स्ट इज ऑनगोइंग वॉर सिचुएशन इन यूक्रेन. और अभी रिसेंट में जो एक मिसाइल टारगेट की गई थी, एक्सीडेंटली हुआ था, ये अनार्म्ड मिसाइल थी जो कि पाकिस्तान के एरियाज में बेसिकली कुछ 126 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर इंटर की है. तो उसको लेकर के भी कंसर्न रेज की गई है दैट हाउ दिस मिस्टेक हैज टेकन प्लेस, बिकॉज Pakistan is very skeptical on this note and they have raised concern as well, right? तो ये दोनों important issues पे बात की गई. Now focus of the meeting की अगर बात करें, the Prime Minister has briefed the latest, Prime Minister को brief किया गया latest development के बारे में कि इंडिया की security preparedness क्या है, किस तरह से हमारे border और maritime securities की ज़रूरत है, अभी जो ongoing यूक्रेन क्राइसिस चल रही है उसके क्या क्या impacts हो सकते हैं. The meeting also discussed the global security scenario between the यूक्रेन और उसके क्या क्या सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पे, जो रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, उसके इंडिया कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, चाहे वो ट्रेड हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात की जाए. द प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो ब्रीफ्ड अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन यूक्रेन, जहाँ पे इंडिया ने ऑपरेशन गंगा जैसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस स्टार्ट किए थे फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन यूक्रेन. उन लोगों को वापस लाया गया. मोस्टली द मेडिकल स्टूडेंट वाज ब्राउट इन, और भी बहुत कैटेगरीज के स्टडीज करने वाले जो बच्चे वहाँ पे थे उन सारों को इंडिया लाएगा, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स दैट वाज मेड बाय इंडिया एंड दिस वाज द मेन फोकस ऑफ द मीटिंग. इंडिया ने अपने नेबर कंट्रीज के भी जो लोग हैं उनको भी वापस लाया है अपने ही बेसिकली एफर्ट्स के थ्रू. सो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग. Now, war and its impact on the supply of semiconductor. This particular news is important for General Studies Paper 3, Indian Economy and Issues Related to Planning, Mobilization, Resource Growth and Development. So, बात करें जिस तरह से कोविड स्टार्ट हुई थी, कोविड के जो डिस्ट्रप्शंस हैं उसने पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को इम्पैक्ट किया एंड दिस हैज सीवियरली इम्पैक्टेड द सप्लाई चेन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, राइट? नाउ द सिचुएशन हैज बिकम वर्स एमिड द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. अब जिस तरह से रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, उसके बाद सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हुई है. सो ऑन दिस अकाउंट द सप्लाई ऑफ टू की रॉ मटेरियल्स, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सेमी कंडक्टर्स में, वो है नियोन और पैलेडियम. ये दोनों की जो शॉर्टेज है वो पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही है एंड एवरी कंट्री इज फेसिंग द प्रॉब्लम विद द सप्लाई चेन ऑफ सेमी कंडक्टर्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स.
नो रीजंस फॉर द शॉर्टेज मैंने आपको बताया वॉर है, उसके अलावा जो पेंडेमिक के लॉकडाउन्स थी उसके उसके भी बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, एंड द चिप मेकिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो शट डाउन की गई है बहुत सारे कंट्रीज में, विच इंक्लूड जापान, साउथ कोरिया, चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ क्या इम्पैक्ट होगी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसकी क्या इम्पैक्ट होगी हमारे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे ग्लोबली। सो अकॉर्डिंग टू द मूडी एनालिटिक्स इन्होंने कहा है कि जो प्लैटियम है और नियोन है दीज आर द टू मेन सोर्सेज, राइट, जो कि प्रोड्यूस की जाती है मोस्टली रशिया में। रशिया 40% ऑफ वर्ल्ड पेडियम को प्रोडक्शन करता है, और यूक्रेन की बात करें दस प्रोड्यूस ऑलमोस्ट वर्ल्ड 70% सप्लाई ऑफ नियो। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिस वजह से सेमीकंडक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबली, पूरे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। Now it is expected that the global chip shortage will worsen and aim ongoing the war between the Russia and Ukraine. Now you can see this graph basically किस तरह से chip material use की जाती है। तो नियोन 90% कमिंग फ्रॉम यूक्रेन एंड पैलेडियम की अगर बात करें 35% कमिंग फ्रॉम रशिया। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है नियोन और पैलेडियम की चिप मेकिंग में? दिस इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और भी किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। सो नियोन गैस इज यूज्ड फॉर फोटोलिथोग्राफी विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर फैब्रिकेशन और इंटीग्रेटेड सर्किट। सिग्निफिकेंटली जो नियोन गैस है दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ लेजर मशीन्स that carve out integrated circuits को। और पैलेडियम एक ऐसी चीज है that has many uses in the semiconductor and electronic manufacturing. So whatever point I'm discussing that is again very relevant for your examination, right? It is also used as coat electrode that help to control the flow of electricity. जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, प्रिंटेड सर्किट्स बोर्ड होते हैं, उसमें भी एसेंशियली चिप मेकिंग में ये सारी चीजें यूज की जाती है। Now Russia account for nearly half of the global supply of palladium, and trade sanctions that threaten the constraint and its availability. Now, moving to the editorial part of the day, that is no aviations for India's stand on Ukraine war. This particular news is important for General Studies paper 2, effect of policies and politics for developed and developing countries. Now, what I'm going to discuss under this editorial, so there are four important subheads that I'll be discussing with you. First is no commitment to principle. Second is defense supply arguments. Third is India's approach. And the last is conclusion. So the entire editorial focuses upon India's stand on Russia and Ukraine war, right? इंडिया ने एब्सटेन किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वोटिंग्स में भी, तो इंडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको हाईलाइट की गई है इस एडिटोरियल में। Now, the recent Russia's invasion on Ukraine has placed considerable moral responsibility, जहाँ पे इंडिया को एक important country, एक significant country के तौर पे देखा जा रहा था, to take some stand, right? However, the United Nations has said that India refused to condemn the violation of right on Ukrainian. इसकी एक बहुत ही लंबी implications होंगी अगर इंडिया sanctions पे वोट करता, because we are heavily dependent on Russia as a military is concerned, as a military equipment is concerned, right? So on that particular part, it has a consequences. That is another level of debate that will not getting into it. अभी जो important aspects editorial में है मैं आपको वो बताऊंगा. Now, Indian government abstained from the United Nations Security Council on Ukraine has sure to rebound the India's interaction with the rest of the world and future which is unfavorable in nature. Now, no commitment to principle. If you look into the commitment that is coming from a country like India, तो ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल अफेयर है वहाँ कंट्री मस्ट बी गाइडेड बाय इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट सम एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, राइट? किसी भी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पे चलने की जरूरत नहीं. इट शुड बी अ यूनिवर्सल रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कमिटमेंट दैट शुड बी कमिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी कंट्री. दिस इज व्हाट द रूल हैज टू से, राइट? डिप्लोमेसी में जो खास करके बायलैटरल रिलेशनशिप होती है उसमें एक कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ कहा गया इंडिया ने किसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया इस चीज को डिसीजन लेने से पहले. एंड इट वाज पॉइंटेड आउट दैट द हाई डिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन द सोवियत यूनियन दैट इज अ रशिया. तो यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट काफी ज्यादा हम डिपेंडेंट हैं. एंड इवन नीड टू सपोर्ट पाकिस्तान इश्यूज ऑन सिक्योरिटी काउंसिल. इंडिया मस्ट नॉट ऑफेंड रशिया कंडेमिंग द इन्वेजन, राइट? हमने देखा है रशिया की बेसिकली जिस तरह से इंट्रीगेशन हुई हैं पाकिस्तान के साथ भी. पाकिस्तान इज ट्राइंग टू कोप अप विद अ पार्ट ऑफ रशिया. तो
तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि उनको भी डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट्स मिले, बट इंडिया वांटेड टू बी ऑन अ हायर साइड। जाहिर सी बात है, अगर रशिया के लिए अगर प्रायोरिटी की बात की जाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो दे विल डेफिनेटली प्रीफर इंडिया एनी टाइम। सो इंडिया ने वहाँ पे भी सेफली खेलने की कोशिश की है कि अगर हम अभी इसके खिलाफ सैंक्शंस में वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर कर सकता है। बट ऑल्दो रशिया इज अ गुड नेबर विद अस, सो वी कैन नॉट expect this to happen, right? And as a result of this, India की जो statement आई है, that is not convincing and even it lack commitment in the principle of international affair. This is what the editor had to say in the overall context that he is talking about. Now, defense supply की arguments दी गई है कि how the defense has to function and how does it actually work. So, no matter on the matter of reliance, it is said that indeed correct that India's rely on Russia for such equipment and the spare parts. Now, India in the past has brought the guns from Sweden. पुराने टाइम पे हमने गन्स की जो ओवरऑल खास करके सप्लाई की अगर बात करें, इंपोर्ट की बात करें, स्वीडन से भी इंपोर्ट की गई है। शिप्स जो है वो यूके से लाई गई है, और एयरक्राफ्ट हैज कम फ्रॉम फ्रांस, राइट? सो दिस इज नाउ विच वॉज नॉट एक्चुअली डायरेक्टली रिलाइंग और डिपेंडेंट ऑन रशिया पार्ट, बट अभी की जो डिपेंडेंस है मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो काफ़ी ज़्यादा है। द रीजन बीइंग इंडिया इज प्लेइंग इट वेरी सेफली। Now, India's approach की अगर बात करें, India has allowed the principle to fall in the wayside। 1956 में उस समय भी रिफ्यूज़ किया था इंडिया ने कंडेम करने से, जहाँ पे हगरी की इन्वेजन की गई थी, एंड इट वाज बट द टुडेज सिचुएशन इज मच वर्स कंपेयर टू द प्रीवियस वन। Now, at this point of time, Jawaharlal Nehru was more concentrate on propagating 5 important principles of Panchsheel, which call for principle for peaceful and coexistence and cherish. This was a Panchsheel concept which existed or which encapsulated at the point when Jawaharlal Nehru was a prime minister, right? Now, the recent invasion of Ukraine rather than is like a Hitler invasion to Poland in 1939, right? And this is one in the event in the century. So, एक सेंचुरी में इस तरह की इवेंट रेप्लिकेट होती है, जो कि इस बार रशिया ने यूक्रेन के साथ की। Now, India's foreign policy establishment seems to have missed its significance in the world, and India must take a long view. How does it want to engage with the entire world? It cannot be a cynical view that we are only dependent on Russia as a part of the defense procurement, but कहीं ना कहीं न्यूट्रल और जो सही चीज़ें हैं उसके साथ भी साथ देने की ज़रूरत है। Now, how to conclude this type of editorial? Definitely, India is the largest democracy in the world, and even if somewhere diminished to one of late, is something that should be taken into consideration. Moreover, ये देखी जाए जो पंचशील के जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कार्ड किया है इंडिया ने, बिकॉज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग में इंडिया ने एब्सटेन किया, राइट? दैट हैज़ अ इम्प्लीकेशंस। वो डिपेंडेंस है, वो कई ऐसी कारण है, कमजोरी है जिस वजह से इंडिया ने इस तरह की एब्सटेंस दिखाई है। बट वी नीड टू ब्रिंग इन द पॉसिबिलिटी ऑफ एनकाउंटरिंग द हार्डशिप, एंड डेफिनेटली sticking to principle is something very important in national interest, and it should be a regard that should be given in own self diplomacy when it's come to establishing a bilateral relationship between any countries and making and setting a standard. So this is how the conclusion can be way forwarded. Now, moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of Saturday questions. For first question, the correct option is C. For second question, the correct option is A. Today's MCQ questions, Bureau of Energy Efficiency के बारे में आपको बताना है। BEE is a statutory body under the Ministry of Power, which was set up in 2002 under the provisions of Energy Conservation Act 2001. And it is mandated to implement the policy and program in the area of efficiency and conservation. So you have to consider the statement which among the following is correct. The second question of the day, that is Malabar Exercise. You have to consider the statement that this is an annual trilateral Navy exercise between navies of India, Japan, and United States of America. And third, the exercise is held alternatively in India and Pacific Ocean. So do check it out, which among the following is a correct option. So this was all about the daily news and editorial analysis for the day, followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.